हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर आमना उस्मान। आज के एपिसोड में विल ट्राई टू डिस्कस ग्लूटाथियोन इन डिटेल। ये क्या इंग्रेडिएंट है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस है कि नहीं, ये किस किस फॉर्म्स में आता है, ये जो आईवी इंजेक्शंस हैं ग्लूटाथियोन के, ये कितने हद तक काम करते हैं और कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशंस हो सकती हैं। एवरीथिंग ऑल अबाउट ग्लूटाथियोन टुडे इन दिस एपिसोड। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दें। इंशाल्लाह विल बी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियोस ऑन दैट कंटेंट। सो व्हाट इज ग्लूटाथियोन? ग्लूटाथियोन इज बेसिकली एन एंटीऑक्सीडेंट जो हम आजकल स्किन के अंदर यूज कर रहे हैं to bring glow, to bring radiance on the skin, for correcting pigmentation, different sort of pigmentation, solar lentigines, melasma. Glutathione किन किन एग्जाम में आ रहा है? Glutathione बेसिकली एक कंपाउंड इंग्रेडिएंट है जो क्रीम्स के अंदर भी है, जो सीरम्स के अंदर भी है। क्रीम्स जो टॉपिकल क्रीम्स लगानी होती हैं, सीरम्स जो टॉपिकल लगाने होते हैं, खाने के लिए जो टेबलेट्स लेते हैं उसके अंदर भी ग्लूटाथियोन आ रहा है, और आईवी जो हम खून के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके अंदर भी ग्लूटाथियोन आ रहा है। हाउ मच इज इट इफेक्टिव? टू बी ऑनेस्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट ग्लूटाथियोन अलोन, इट हैज अ एफिशिएंसी, बट व्हेन यू कंबाइन इट विद अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी, लाइक कोजिक एसिड, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द टॉपिकल एप्लीकेशंस, जब आप क्रीम्स लगा रहे हैं ग्लूटाथियोन बेस्ड और उसके साथ विटामिन सी ऐड करते हैं, कोजिक एसिड या कोई फर्दर लाइटनिंग इंग्रेडिएंट जब आप ऐड करते हैं, तो रिजल्ट्स आर वे मोर बेटर देन applying only simple glutathione creams or serums or whatever. But when you combine it with rest of the products, with rest of the ingredients, तो जो आपके results हैं वो multifold हो जाते हैं. Same goes with the glutathione oral intake or IV. Now there is a question that either कि ग्लूटाथियोन अकेला ही एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी है हमारे सारे पिगमेंटेशन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, या हमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है? और द आंसर इज कि कोई भी चीज़, स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द डिसपिगमेंटेशन या पिगमेंटरी इश्यूज इन एशियन स्किन, तो आपको काफ़ी मेहनत और तगदो करनी पड़ती है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, ताकि उनकी कंप्लेंट्स को डील किया जा सके। व्हेन यू टॉक अबाउट डुअल टोन, व्हेन यू टॉक अबाउट सोलर एंटीजेंस, when you talk about the pigmentation, melasma, epidermal या dermal, सारे सूत्रों के अंदर simple glutathione works lesser than when combined with other ingredients. मेसोथेरेपी के अंदर अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो ग्लूटाथियोन के अंदर विटामिन सी ऐड कर रहे हैं या ट्रांसएग्जामिक एसिड ऐड कर रहे हैं या कोई और चीज इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, तो इट स्टार्ट गिविंग बेटर रिजल्ट्स। जनरली पीपल आस्क कि हम ओरल मेडिकेशंस करते हैं तो हमें रिजल्ट्स लेसर आते हैं देन आईवी, बिकॉज ग्लूटाथियोन हैज इट्स डोज, वो आपके वेट के साथ है। जो आपका खाने की दवाई है उसकी बायो अवेलेबिलिटी, यानी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब जब ये है कि अगर आपने 500 मिलीग्राम बॉडी के अंदर खाया वो दवाई, तो एक्चुअल में आपको उसकी रेजिडुअल अमाउंट, जो एक्चुअल फंक्शनल रेजिडुअल अमाउंट है आफ्टर पासिंग थ्रू द गट और थ्रू द किडनी और थ्रू द लिवर या जो भी ऑर्गन जिससे वो पास ऑन हो रही है, उसके बाद जो एक्चुअल फंक्शनल अमाउंट है वो कितनी मिल रही है। तो जो ग्लूटाथियोन ओरल फॉर्म में लेते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी इज लेस। व्हेन यू टॉक अबाउट आईवी की बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली इट गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इट बाईपासेस ऑल द जो आपके बाकी के जो गट है या लिवर या किडनी है, तो वो सारे उसको बाईपास कर देती है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जो आपका आईवी ग्लूटाथियोन है या आपका ओरल ग्लूटाथियोन है, उसके रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन द इंडिकेशन यू टेकिंग फॉर। अगर तो आप ले रहे हैं सोलर लेंटिजेंस के लिए और आप टॉपिकल क्रीम्स लगा रहे हैं ग्लूटाथियोन और विटामिन सी की, और आप साथ ओरल फॉर्म में ग्लूटाथियोन विटामिन सी ले रहे हैं और साथ आईवीज ले रहे हैं या डुअल टोन के लिए काम कर रहे हैं, फिर तो उसके रिजल्ट्स बेहतरीन आ जाएंगे। बट व्हेन you have this dream in your brain that you're skin type 4 or 5 and you want to turn back your skin into skin type 1 or 2, well, it's still a dream to come true because it's practically not possible. हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ये स्किन टाइप है और हमने आईवी इंजेक्शंस के बारे में सुना है और हम ये डिमांड करते हैं और ये, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स वेरी हाई एंड रिजल्ट टू अचीव बाय जस्ट ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, एंड probably at this point of time I'll say it's impractical to dream for that. I mean, you can still go one tone lighter with basically multiple treatment options that might include some sort of facials or dermabrasions like hydrofacial, cryo, skin brightening lasers, and then mesotherapies, and then combining with night creams or night serum, brightening serums, along with sun protections, along with some oral form of glutathione, vitamin C, and then IV. तो अगर आप ये सारे रिजल्ट्स लेना चाहते हैं with glutathione injections can give a bit better results than alone, but otherwise जो बाकी चीजें हैं वो भी बड़ा जबरदस्त काम कर रही होती हैं। तो अगर आपके milder indications हैं, if you want to skip glutathione injections IV, you can surely do it. When you specifically talk about IV glutathione for skin brightening, just trying to be true as much as possible, उसके अंदर अगर आप ग्लूटाथियोन को स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस के तौर पे यूज कर रहे हैं, आप आखिर के अंदर मायूस रहेंगे। उसकी वजह क्या है कि ग्लूटाथियोन कैन नेवर बी यूज्ड एज स्किन ब्राइटनिंग, बट कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग रेडियंस or to bring natural glow to your skin.
this much it works. So the glutathione की डोज क्या रिक्वायर्ड होती है या कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं अगर आप किसी भी इंडिकेशन के लिए आईवी लगा रहे हो, it varies on the dose of the injection, your own weight and the results that you're trying to get and the time you have to gain the results. अगर आपको milder indications के लिए and you already skin type 2 or 3 तो आपको बहुत कम इंजेक्शन चाहिए होंगे and then you can space out the injections, you can just get एक इंजेक्शन हर 15 दिन के बाद या एक इंजेक्शन हर महीने. लेकिन अगर आपको सीरियस स्किन इश्यूज हैं, पिगमेंटेशन इश्यूज हैं और आप प्रॉपर रिजल्ट्स चाह रहे हैं तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट विल वर्क बेस्ट. तो इसकी डोज जनरली once per week से लेके twice per week और alternate day ले सकते हैं with the variety of injections available in the market. I mean, if you talk about 300 milligram, वो उसकी डोज फर्क होगी. If you talk about 600 milligrams की डोज फर्क होगी. If you talk about 5000 milligrams उसकी डोज फर्क होगी. बट यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगी कि ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन मार्केट के अंदर आ रहे हैं with 5 lakh, with 500,000, with 50,000, with 50 lakh. This dose, I mean, this is practically is delusional. The milligram, it tells you the weight. You take this amount of bottle and it has this much powder in it. No technology can make 50,000 milligrams the same amount of powder as 300 milligram is. So be mindful. Don't live in a dreamland. आपका जो डोज है वो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है. Sometime I have a doubt trusting that dose that is written on the boxes because it doesn't go with the amount of powder they have. The same amount of powder they have with 10,000 milligram, the same amount of powder they have with 5,000 milligram. So I mean, I still scientifically can't believe it. मैंने और भी सुना है कि clients कहते हैं कि ये बिल्कुल इसके कोई side effects नहीं है. I mean, side effects हैं कि नहीं ये तो research बताएगी आने वाले दिनों में कि हमने कितने ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लगाए और क्या उसका रिजल्ट आया. बट just being an antioxidant injection मे भी नहीं है, लेकिन these injections are not registered in Pakistan at any platform. So not sure कि हम इसके ऊपर proper research हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि नहीं हो रही है, कि ये कितने results देते हैं, इसकी complication है कि नहीं, या ये कितने इसके side effects हैं कि नहीं. So I mean, we're still waiting for a lot of data to accumulate and then we can run through via meta-analysis or randomized trial studies. But at least for now, as long as we're doing it, it doesn't tell you any sort of complications. Otherwise, जब आप profiles के साथ monitor कर रहे होते हैं patient को, उसके अंदर भी the patient pretty much stays well और complaint free रहता है. कोई खास allergic reactions भी इसके साथ noted नहीं है. So yes, when you're talking about dealing with melasma or resistant melasma, glutathione might have a role, but when you're talking about skin brightening injections, maybe it's a little more than practical to desire from only glutathione injections. Glutathione किन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए? Actually, एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर ये registered injections नहीं है, तो unless and until जब तक कोई authority इसको register ना कर दे through proper channel, तो well, I think it's not a good idea to go for glutathione injections that are unregistered and you don't know the trail of कि ये कहाँ बन रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनकी जो purity है या जो इनका sterilization है वो up to the mark है कि नहीं. Having said that, there's a chaos in the world के glutathione. So as long as अभी तक तो कोई allergic reaction usually noted नहीं है, but still you shouldn't risk this much with your health because it's not a mandatory injection you should get. But otherwise you have alternate choices that are more safer, that are registered in the world and they're उनकी जो qualities हैं वो similar काम करती हैं. लेकिन specifically बाकी जो healthy हैं individuals वो लगा रहे हैं और never mind. लेकिन जो unhealthy individuals हैं या जिनको health issues हैं, जिनको कोई किडनी के इश्यूज आ रहे हैं या जिनको किसी को कोई लिवर का इशू है या बिकॉज लिवर मैंने इसलिए कहा आमतौर पे glutathione runs from the kidney, but otherwise the glutathione vials we're injecting, they have plenty other ingredients. So अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू चल रहा है, कोई persistent infections चल रहे हैं या आप कोई पहले ट्रीटमेंट्स लेते रहे हैं किसी क्रॉनिक इलनेस का या आपको कोई किडनी डिजीज़ है या कोई और अदर हेल्थ इशू है, तो इट्स बेटर टू अवॉइड. अदरवाइज अगर आपकी प्रेगनेंसी है या आपने फीड करना है या आप आने वाले वक्तों में कंसीव करना चाह रहे हैं, it's better to avoid because there is no sufficient data that tells you that it's very safe in pregnancy or lactating mother. And for all those जिनको वैसे otherwise glutathione price friendly नहीं लगता, बहुत महंगा लगता है, but they still have the complaints of pigmentation issues on their body or the dual tone, I must add कि उनके लिए other options हैं. glutathione tablets हैं
मल्टीपल रजिस्टर्ड ब्रांड्स हैं जिसमें अच्छी डोजेज भी हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड डोजेज भी हैं, वो रिजल्ट्स देते हैं। सो विजिट योर कंसल्टेंट, गो फॉर अ रिनाउंड ब्रांड ओनली जिसके रिजल्ट्स भी हों और जो ऑथेंटिक कंपनी भी हो। यू नो, डोंट टेक अ टेबलेट लाइक अ च्यूइंग गम यू बाय फ्रॉम अ शॉप। आई मीन इट्स स्टिल अ टेबलेट, इट गो इनसाइड यू एंड विल डू समथिंग। तो जब भी आपने कोई दवाई लेनी है उसको टॉफियों की तरह ना खाएं, उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें एंड इफ इट्स हेल्थ फ्रेंडली जस्ट टेक इट ओनली एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर।